सो जब ओरियो आया था मुझे मालूम है कि देयर वर लॉट ऑफ अदर क्रीम बिस्किट्स एज वेल, कि सनफिस्ट के एक दो हो गए या तो फिर पार्ले के अगर हो गए वो सब. सो व्हेन यू गाइस यू नो व्हेन ओरियो वाज इंट्रोड्यूस्ड, या तो फिर आपने जब काम किया था, लाइक व्हाट वाज हाउ यू गाइस, हाउ यू वांटेड टू प्रेजेंट द ओरियो इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, कि किस तरीके से वो पोजिशनिंग होने वाली थी, लाइक व्हाट वाज द बीटीएस बिहाइंड दैट. या तो ओरियो के केस में दो एस्पेक्ट्स बताऊंगी। एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव होता है और एक तो जो मार्केट में आप लॉन्च करोगे और कंज्यूमर को कैसे प्रेजेंट करना है। हाँ. कैडबरी को क्राफ्ट ने अक्वायर किया था। क्राफ्ट वाज एन अमेरिकन कंपनी, कैडबरी वाज अ यूरोपियन, यूके का कंपनी। एंड जब तक कैडबरी थे लार्जली द फोकस वाज ऑन चॉकलेट। हमारा पोर्टफोलियो भी सिर्फ चॉकलेट ही था। Kraft as a company was big time into biscuits and cheese and a lot of other things which are beyond chocolate. So like I told you ना, जब एक्विजिशन होता है ना तो कैसे चीजें चेंज होती हैं या जो कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं ऑफ एन एक्विजिशन वो आता है। हाँ. तो क्राफ्ट ने जब अक्वायर किया तो वन ऑफ द मेन थिंग्स वाज कि वी विल मेक अ स्प्लैश एंट्री इन बिस्किट, बिकॉज बिस्किट का जो मार्केट इंडिया में है वो ह्यूज है। मतलब अगर चॉकलेट जो भी है उसका मतलब 4 गुना 5 गुना, मतलब बिस्किट इज जस्ट मच मच बिगर एज अ कैटेगरी। तो द ऑर्गेनाइजेशनल थिंग वाज कि हम लॉन्च करेंगे, बिस्किट्स में एंट्री करेंगे, एंड इट हैज टू बी अ वेरी स्टार स्टडेड एंट्री। थिंग्स कांट गो रॉन्ग, इट्स वेरी हाई स्टेक्स। एक्विजिशन के बाद हमें यही तो करना है, हाँ. क्योंकि इंडिया में चॉकलेट्स है बट बिस्किट नहीं है, एंड दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो ऑर्गेनाइजेशनली क्या होता है, लीडर्स बोलेंगे कि हाँ हमने एक वेकेंट स्पेस में एंट्री करी, रेवेन्यू बढ़ाया, हाई स्टेक। So this project was managed by the CEO himself, and the timelines were like very aggressive. Okay, this will be the fastest launch that we will do. So it was great, firstly, to be part of. I was just starting out brand manager then, but I guess it was great to be part of that experience when you are, part of a little ship or a boat, which everyone is so interested in, हाँ. and there are a lot of, there's a lot of visibility and support and sponsorship for it. So you obviously like these assignments, right? Ki chalo, high हाँ. visibility, high impact sort of assignment. Now, Oreo is a global biscuit brand. So obviously, America made the largest, sort of selling cookie, at least at that time it was. तो काफी फेमस टाइप का प्रोडक्ट था इंटरनेशनली, बट इंडिया में लोग नहीं जानते थे नहीं उसे, ना. एक्सेप्ट हाँ. फॉर एकदम ही टॉप क्रेम दला क्रेम जो बाहर जाते होंगे, और जो हाई एंड स्टोर्स होते हैं इंडिया में जहाँ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, बट अदरवाइज उसकी नॉलेज नहीं थी। तो ये ब्रांड को जब लॉन्च करना था, एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें ब्रांड गाइडलाइंस काफी डिफाइंड रहते हैं कि यार ब्रांड ऐसी ही होनी चाहिए। तो आप मुझसे अगर पूछेंगे तो ओरियो लॉन्च करने में मैंने क्या कर लिया, नाम भी डिसाइडेड था ब्रांड का, कलर और लोगो भी डिसाइडेड था, सब तो मतलब प्रोडक्ट भी रेडी था, तो हमने क्या उसमें उखाड़ लिया। हाँ. बट सी द थिंग इज दैट व्हेन यू bring a global brand which has no recognition to a market, fine, product hoga, branding hoga, obviously, so you're not starting from scratch. So obviously you take something which has worked in so many markets internationally, तो कि यार हमें यही करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो एक कम होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज डिजाइन करनी है, चलो ठीक है इसकी प्लेबुक है अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ. लेकिन फिर जब आप कंज्यूमर को खिला रहे हैं बिस्किट, तो वो कह रहे हैं कि ये तो काला बिस्किट है। काला क्यों है भाई, ब्राउन क्यों नहीं है अगर चॉकलेट बिस्किट है? नाउ द कलर इज गेटिंग पिक्ड अप, but it's a global product. I mean, we cannot change the product. Doesn't matter. So we were like, यार लोग कह रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, काला है. But obviously the people that we were working with in the global team, they said, don't worry, ये हम हर जगह सुनते हैं. But don't worry, आप launch करो. This is not a factor which will, which will make the product be rejected or anything. It's a small issue. आगे बढ़ो. So the benefit of again working in a large organization is कि कि चलो ठीक है, ये 4 कंट्रीज में लॉन्च करके आए हैं, ठीक है, this is not going to be as big a problem. हाँ. आप अकेले इस जर्नी पे निकले होते तो यू वुड हैव थॉट, ओ माय गॉड, काला बिस्किट तो हम लॉन्च ही नहीं कर सकते, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। सो यू जस्ट सॉर्ट ऑफ, अभी 10 साल बाद मैं ये लर्निंग निकाल सकती हूँ कि कुछ कुछ चीजें जो हमें लगती है कि नहीं यार ये तो एकदम अलग है या ये नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाए। आप कल हाँ. को मतलब कोई भी रैंडम कलर का बिस्किट निकाल सकते हो, विच यू फील लाइक अरे ये तो नहीं चलेगा, बट वो चल जाएगा इफ यू डन कपल ऑफ अदर थिंग्स राइट।
हाँ So we did have to tweak the recipe, and despite the product being ready, I remember हमने 3 या 4 rounds of iteration किए थे on the specifics of the product कि क्रीम कितनी मीठी करेंगे, कुकी कितनी बिटर करेंगे, थोड़ा उसको इंडियन पैलेट के लिए ट्विक किया था. तो भले ही ग्लोबल ब्रांड लॉन्च किया हो, बट एज अ ब्रांड मैनेजर मतलब मैंने तो 4 तरह के प्रोडक्ट टेस्ट कर दिए और मुझे समझ में आ गया कि भाई कैसे टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की. हर टेस्ट वाज ऑफ अ डिफरेंट काइंड. And then, because we kept getting a little bit of this feedback कि कड़वा है ये वो, and finally decided उसको Cadbury Oreo बोलो. Why not? Because then Cadbury will immediately lend chocolatiness, and it will overpower this perception कि it's bitter. Then right when we were launching Oreo biscuits is a very different market. 5 रुपए और 10 रुपए के बिस्किट बिकते हैं. हाँ बिस्किट में बहुत बड़े बड़े organizations were leaders, right? There is Parle, there is ITC, there is Britannia, and all of them were Indian companies, right? तो MNCs थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, Indian companies अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनके business KPIs, everything is different. What हाँ you're chasing is different. In a large setup, you might want to chase margins, somebody else might be chasing just volume and revenue, so then they're able to, price their products a lot more competitively. So one of the big things for us also was कि यार इसमें किस टाइप का मार्जिन हम बनाएंगे. We were used to the chocolate margin, and biscuit margin seemed much lower because it's a different category. You've got to give value in biscuits. So a lot of decision happened on क्या price point होगा, 20 के 10, 10 कैसे करेंगे, 5 करना है कि नहीं, 5 रुपए का लॉन्च करेंगे कि नहीं, is it sustainable, and those kind of things. Consumer के केस में cream biscuits were a very kiddie category. उसमें cream का advertising होता था, strawberry, pineapple, ये वो. Advertising was very cartoon oriented. बिस्किट्स में वो सब टैगोस और स्टिकर्स फ्री आ रहे थे. ओरियो में ये सब कोई जिंग बैंग नहीं था. इनफैक्ट ओरियो का एडवर्टाइजिंग वाज टॉकिंग टू द मॉमी and not talking about any flavors of the cream or anything at all. What we wanted to communicate was, listen, it's a biscuit which you can just enjoy, with your child. You can have a little ritual of eating it, twist it and lick the cream. And US में एक ritual होता है of dunking the biscuit in milk and having. हम लोगों ने इस पे बहुत डिस्कशन किया कि भाई क्रीम बिस्किट तो इंडिया में कोई नहीं डंक डुबोता है. डंक का मतलब ही नहीं पता. डंक तो वर्ड ही नहीं है इंडिया के वोकैबुलरी में. हम ये सब क्या कर रहे हैं. But then again, it was a global brand, and it opens your eyes up to the power of a global positioning. We still went ahead with like dunk. Dunk नहीं समझ में आ रहा था लोगों को. People were like कि हम तो dunk नहीं करते हैं. But we said advertising is not about कि आप literally अपना cream biscuit dunk करो. आप please करो. But you're building propositions for the brand. You're differentiating the brand. You're basically saying that there's a way in which you can eat it. And why? Because, you can have a moment with your child while you eat it. Because that's how you finally do a little bit of advertising. So we did some work on advertising, and we showed a father and child very warm, heartwarming ads. So a lot of work done in that space. And then, of course, one large piece of work was Cadbury, जो कि market leader है chocolate में. How will it become a market challenger with the launch of biscuits? क्योंकि बिस्किट में तो हम कुछ भी नहीं है. बिस्किट का हाँ डिस्ट्रीब्यूशन इज फार बिगर देन चॉकलेट. कैसे करेंगे. ये अप्रोच तो नहीं चलेगा कि हाँ हर चॉकलेट की दुकान में जाके बिस्किट डाल दो. उससे तो कुछ भी अचीव नहीं होगा. यू विल बी स्क्रैचिंग द सर्फेस ऑफ द ओशन. So how do you change an organization's mindset fully from one of a leader to an aggressor? Um, that also is a tough path to walk, because when you're आप करते हो कुछ चीजों, आप डालोगे मार्केट में अग्रेसिव स्कीम्स, आप अपने रिटेलर को अपने साथ लेने की कोशिश करोगे, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है. जो टीम को आदत है कि हाँ भाई चॉकलेट तो बिक ही रहा है, थोड़ा बस जाके रिप्लेनिश करते हैं स्टोर्स में, यहाँ पे जाके बेचना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा. So there was all of this organization DNA change which needed to be done. Right. Now, this is not something which happens overnight. This is a हाँ multi-year journey. And so we launched Oreo, but with some tweak in the product, with Cadbury added onto it, with price point. We finally didn't launch a 5 rupee Oreo. हाँ We said, no, we cannot make money on it. उससे कोई फायदा नहीं होगा. So we took some decisions, and then we did a lot of work to build new category knowledge and new category DNA in the organization. So that was really the journey of Oreo. राइट
अभी ना आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट प्राइस पॉइंट। तो किस तरीके से प्राइस पॉइंट डिसाइड होता है, क्या फैक्टर्स आप कंसिडर करते हो व्हाइल लॉन्चिंग द बिस्किट? बिकॉज यू हैव टू लुक एट कंपटीशन एज वेल एंड इंडियन मार्केट एज वेल, कि इंडिया में कोई 30 रुपए देगा कि नहीं देगा इस बिस्किट के लिए। और या दूसरा क्वेश्चन एडेड टू दिस, सो नाउ ओरियो हैज दिस डिफरेंट पैकेज साइज, एक बड़ा पैकेट आता है, एक छोटा पैकेट आता है। तो उसमें भी किस तरीके से डिसाइड होता है कि इतनी बिस्किट ही जाएगी एक पैकेट के अंदर और बड़े पैकेट में इतनी बिस्किट जाएगी, तो वो भी डिसीजन किस तरीके से लेते हैं? देखिए, प्राइस पॉइंट में भी आप किस चीज में प्ले कर रहे हैं वो डिसाइड करता है। बिस्किट के केस में जब आप भाई हजारों बिस्किट है मार्केट में, तो यू विल देन नॉट ट्राई एंड क्रिएट फर्दर कम्प्लेक्सिटी फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को ऑलरेडी नाम समझना है, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है। अभी उसको तुम कहो मेरा 12 रुपए का लिपस्टिक है, बिस्किट है, जब सब कुछ एवरीथिंग इज एट 5, 10, 20। So some decisions were simple कि you follow the category in some cases. Simple रखो, 10 रुपए का बिस्किट है, गत्ते में इतना डालेंगे, दुकान को भी समझ में आए अच्छे से और कंज्यूमर को भी समझ में आए। चैलेंज इसमें बस ये होता है कि भाई 10 रुपए में आप 10 कुकीज दोगे कि 8 दोगे, एंड यू विल ऑलवेज नो कि आपका कंपटीशन क्या दे रहा है। इसलिए इन एनी बिजनेस आप अपने लिए कुछ एक बेंचमार्क अग्री कर लेते हो कि यार अगर मैं कुछ लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे इतना तो मार्जिन चाहिए, जिसे कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। मैं इतने पैसे खर्च करूंगा एज अ बिजनेस ओनर और अ लीडर 2-3 साल तक टू बिल्ड माय बिजनेस। हाँ। कुछ कुछ चीजें रहती है, nobody plans for 10 years frankly, but we all have a 3 to 5 year plan when you launch something in large cities कि यार इतना मार्जिन बनना चाहिए। शुरू में चलो कम होगा तो चलेगा, लेकिन ईयर 2, ईयर 3 ऐसे ऐसे इम्प्रूव होगा। और क्यों इम्प्रूव होगा, आप क्या करोगे कि इम्प्रूव होगा? थोड़ा स्किल से इम्प्रूव होगा, थोड़ा एफिशिएंसी से इम्प्रूव होगा, थोड़ा एक बिस्किट हटाओगे 1 साल 2 साल के बाद, उससे मार्जिन इम्प्रूव होगा। तो आप पहले यू हैव टू बी क्लियर हाउ मच मार्जिन यू वांट टू मेक। दैट डिसीजन इज फाइनली एवरी बिजनेस का कॉल। एक जो हम्म। लोकल बिजनेस होता है और एडवर्टाइजिंग में पैसा नहीं खर्च करता, दे कैन हैव अ वेरी डिफरेंट P&L स्ट्रक्चर, दे कैन गिव डिटेल्स की। लेकिन हमें ओरियो को ब्रांड बनाना था, सो वी न्यू हाँ। कि हम उस पर एडवर्टाइजिंग पे भी पैसा खर्च करेंगे, तो रिटेल स्कीम उतनी नहीं मिलेगी जितना कंपटीशन देगा। So the way you manage it is, your sales people will come back and say retail में तो competition बहुत ज्यादा, ट्रेड लोड चला रहा है, स्कीम दे रहा है, दुकानदार को, हम क्यों नहीं उतनी दे रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि भाई हम एडवर्टाइजिंग पे भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं। So that balance you have to figure based on हम्म। how you want to run the business. So finally, I mean, what you offer is a function of कि आप कितना चाहते हो प्रोडक्ट घुसे घर में, क्या स्वीट प्राइस पॉइंट है, आप चेस कर रहे हो मार्केट को या आप मार्केट क्रिएट कर रहे हो। बहुत सालों के बाद जब आपको मार्केट क्रिएट करना है, मॉडर्न ट्रेड, ये जो स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स, रिलायंस एंड मोर एंड ऑल, जिसमें लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे 10-10 रुपए के पैकेट नहीं चलेंगे, तो आपको करना पड़ेगा एक 50 और 100 रुपए का बिस्किट का पैकेट लॉन्च। यू कैन हैव अ टिफिन फॉर्मेट, और यू कैन हैव जस्ट लार्ज बिस्किट rolls packed into something which gives value, because there you're trying to create a market, you're trying to load the pantry of the shopper कि एक बार में ही वो इतना खरीद ले, you know हाँ। so market creating opportunity है, market following opportunity है। आपका कितना aggression है उस business पे? If it's a big bet for you and you're willing to bleed on your margins for some time, so maybe for a couple of years post launch you will have very aggressive pricing. Aggressive could be in the price point, or it could be the value that you offer, हम्म। 12 cookies at 10 or 8 cookies at 10। तो ये डिसीजन, मतलब ये सारे फैक्टर्स इसको वो करते हैं। राइट। सेल्स, इजी सेल्स पुश कैसे आएगा? यू नो what can I say, how can I make it easy for my sales team to sell? So if I can give them something which is a sweetener in all of this, then that becomes a factor. So we all try to obviously make things easy for the last person who will go and sell हम्म। to a shop, in a traditional CPG environment. And so these are like many, many things which go into pricing.